last time. Okay, so we ended here last time. Okay, motor control circuit में we not only have to make sure कि आपकी logic ठीक होनी चाहिए, बल्कि वो logic इस तरह से हो कि that can take care of any possible accidents. It should be safe as well. So इसीलिए हमने जो logic बनाई थी उसको हमने फिर change किया था. That was a small quiz, and it is good now कि हम देखें कि the solution is in using the stop button in normally closed contact. So इससे फायदा क्या होगा? इससे जो with this we have this channel number 7. ये अब आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा जब हम इसको नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में यूज करेंगे. यू सी द नाउ दिस इज नॉर्मली क्लोज्ड. ठीक है, तो स्टॉप बटन जब नॉर्मली क्लोज कंडीशन में हम यूज करेंगे. सो व्हेन द स्टॉप बटन इज प्रेस्ड, अब जब भी इसको कोई प्रेस करेगा, सो दिस चैनल विल बी डी एनर्जाइज्ड. और इवन इफ अगर आपके पास कोई ये वायर यहाँ से या फिर either of these contacts or these are the 3 possible locations जहाँ पे आपके पास wire can fall off the screws accidentally, या कोई और भी वजह हो सकती है. In either case, जैसी कोई stop button का अगर wiring कोई problem आएगी, any problem with the wiring, any wiring problem of the stop push button, तो उस वक्त भी आपके पास ये मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज अ फेल सेफ कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट टाइम हमने देखी थी. लेट्स मूव ऑन. आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. मुझे इसको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा. जस्ट वेट. Okay, so we solved one potential problem from the last. आप लोग स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? Yes, sir. Okay. So, okay, अब हम अपडेट देखते हैं कि आपके पीएलसी प्रोग्राम में अपडेट क्या होगी. दिस वाज द इनिशियल सिंपल प्रोग्राम. स्टार्ट इन स्विच है, नॉर्मली ओपन है. दिस इज नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, और वी आर यूजिंग दिस the out contactor as a seal in circuit, ताकि क्योंकि पुश बटन जब आप पुश बटन को स्टार्ट करेंगे, प्रेस करने के बाद आप यू विल रिलीज इट, तो ये तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. दिस विल कम, अ पल्स कम्स लाइक दिस, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी. बट दिस पल्स विल एनर्जाइज द कॉन्टैक्टर, एंड वंस द कॉन्टैक्टर इज एनर्जाइज्ड, हमारे पास ये जो इसका जो मेमोरी बिट है, दिस विल बी working like a seal in contact,
and this will start on, और फिर हमारे पास जो continuous है क्योंकि ये तो ऑफ हो जाएगा, इसके ऑफ होने के बावजूद the current will flow through this header. Okay, so this is the program for not fail safe. This is not fail stop configuration. Fail stop configuration is this one. Fail stop configuration. कि जैसे ही आपके पास किसी किस्म का फेलियर होगा तो मोटर विल टर्न ऑफ. इन दैट केस जब इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर जो स्टॉप बटन है दिस इज इन नॉर्मली ओपन कंडीशन. Start button is also normally open condition, and here we have this stop button in normally closed. Normally closed का मतलब है कि it will energize, it will keep the energize, या ये वन प्रोवाइड करेगा आपकी corresponding input को input 7. ठीक है, so stop button is pressed. चूंकि stop button is pressed in normally state, so that's why we are using the virtual contact that we are using. It should be a sort of a this switch normally open. ठीक है, so and then whenever फिर मोटर स्टार्ट होगी, इट्स रनिंग. सो व्हेनेवर अगर ये वायर अगर ब्रेक होती है या आपके पास जो है कोई प्रेस करेगा इसको, तो जैसे ये नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन, सो नॉर्मली क्लोज्ड है नॉर्मली, सो व्हेन इट इज क्लोज्ड, तो जैसे ये ओपन होगा कोई प्रेस करेगा तो दिस विल डिस्कनेक्ट द मोटर. अच्छा, इसमें किसी किस्म के कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में? ओके, अगर हो तो आप लोग जस्ट रेज योर हैंड और पुट द क्वेश्चन. देयर आर सम कमेंट्स ऑन द नॉर्मल स्टेट. जो हम नॉर्मल स्टेट कहते हैं, दिस इज बेसिकली स्टेटस ऑफ द, या तो आप रियल जो स्विच है उसकी बात कर रहे हैं या फिर हम वर्चुअल की बात कर रहे हैं. बिकॉज वी हैव सीन हियर इन द लास्ट कि यहाँ पर ये स्टॉप बटन जो है वो नॉर्मली क्लोज्ड है, बट द लॉजिक दैट वी आर यूजिंग हियर इज नॉर्मली ओपन. सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द टर्म, या उसको थोड़ा सा हम और मजीद देख लें कि व्हाट इज दैट, हाउ शुड वी टेक दिस एंड यूज दिस दिस सॉर्ट ऑफ अ फ्रेज नॉर्मल, कि हम ताकि हम we can avoid any sort of confusion. So the normal status for the real physical or virtual, virtual का मतलब ये जो सॉफ्टवेयर within PLC program हम यूज करेंगे. Contact is its status. Normal is the status while it in resting condition, यानी जब आप उसको without any energy, without anything, it is normally in this state. ठीक है. This is not necessarily its status while the process is in the normal operating mode. This is another thing कि normal का मतलब ये नहीं है कि लाजमी तौर पे कि वो आपके पास जो है वो operating condition है. For example, this is normally open, this is normally closed. This is closed is one status in the normal situation, जबकि यहाँ पे जब आप open करेंगे तो this will be the status जब आप उसको shut down कर रहे हो. And therefore, just because a switch is configured as normally open does not necessarily mean it must be in the open state in the field. ठीक है, so इस चीज का ख्याल रखें. And I will again go back and see कि जैसे यहाँ पर अगर आपके पास normally open का हम virtual bit use कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि in the field the corresponding device is also in the normally open situation. ठीक है. So this is how we implement the logic. Okay, moving on. Status of the switch is a function. अब इसको हम the status कि वो अभी on है या off है, either 1 or 0. It is basically a function of two things. Number one, कि हमने उसको configure कैसे किया हुआ है. ठीक है. The second thing is the stimulus that we apply. So ये जो stop button है, this is configured as here normally. अगर ऊपर this is normally
closed. These are the main wirings जो कि आपके पास पैनल पे जा रही हैं, ठीक है. They are connected to the PLC and power, ठीक है, power and PLC. And here these are going to the PLC and power. PLC and power. So यहाँ पर तो आपके पास ये कनेक्शन बना हुआ है. So this is normally closed. यहाँ पे अब अभी आपके पास कनेक्शन नहीं बना हुआ. So this is normally open state in the field. लेकिन इसके लिए स्टार्ट के लिए I have both options कि मैं इसको इस स्टार्ट बटन को अपनी PLC प्रोग्राम में मैं नॉर्मली ओपन भी यूज कर सकता हूँ और मैं इसको नॉर्मली क्लोज भी यूज कर सकता हूँ. सिमिलर गोज हियर द स्टॉप बटन ऑल्सो. इसको मैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में इसको मैं यूज कर सकता हूँ. वट एवर द लॉजिक इज सुटेबल फॉर माई प्रोग्राम, ठीक है. अच्छा, एक और पोटेंशियल प्रॉब्लम जो अभी हम देख रहे हैं सिंपल सर्किट के अंदर वो क्या हो सकती है. अभी हमने ये देखा था कि we are talking about the wiring connections here and on the terminals of these devices. What about this? अगर यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास ब्रेकर्स के अंदर कहीं पे कोई लूज कनेक्शन हो जाता है एंड द ब्रेकर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मोटर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनके अंदर कोई कनेक्शन वीक हो जाता है तो क्या होगा. सो इन दैट केस हो सकता है फॉर एग्जांपल कि कॉन्टैक्टर की जो कॉइल सर्किट है वो ओपन हो जाए ड्यू टू अगेन वायर फॉलिंग ऑफ स्क्रू टर्मिनल एट द कॉन्टैक्टर्स, या जो हमारे पास थर्मल ओवरलोड है वो ट्रिप कर जाता है, ठीक है, तो ओपन हो गया वो. बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि PLC doesn't know about it कि कॉन्टैक्टर के साथ रियली क्या है. PLC might have sent a signal, ठीक है, उसने सिग्नल सेंड कर दिया होगा और जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द PLC इज 1. बट और उसकी जो PLC की इनपुट है, इनपुट लॉजिक इनपुट टू द PLC इज आल्सो ओके. लेकिन जो मोटर है, जो मोटर एनर्जाइज होगी, वो मोटर अभी तक स्टॉप रहा है बिकॉज ऑफ कि हमारे पास वायरिंग प्रॉब्लम जो है मोटर में आ गई है, मोटर की तरफ आ गई है. सो इन दैट केस क्या होगा, PLC को कुछ भी नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ओपन फॉल्ट हो जाए कॉन्टैक्टर के कॉइल पे, आपने PLC को एनर्जाइज कर दिया आउटपुट चैनल को, लेकिन मोटर डजंट स्टार्ट एंड PLC हैज नो फीडबैक ऑफ द कॉइल सर्किट. वी कैन इमेजिन कि if there is an operator and he or she presses the start button and then maybe you are on the field, वहीं पे हैं आप, and when you press the button the motor does not actually starts. So अब think about it कि PLC is providing one signal to the motor. Motor is not rotating, ठीक है, motor is not rotating, and you just saw an overload switch. उस पे एक प्रेस एक रीसेट का बटन होता है. I should go back and so you can see here एक रीसेट बटन जो ओवरलोड रिलेज हैं उनके ऊपर होता है. तो you can reset this so that कि वो internally जो है वो ओपन कंडीशन से वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाए. सो जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी PLC की जो आउटपुट है इट इज 1, सो इट विल energize the motor abruptly. So because the PLC's output is already energized, this may be dangerous as the operator is troubleshooting the fault. Normally जब आप troubleshoot कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी लॉजिक खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं हो जानी चाहिए. So this is another scenario कि PLC ने yes कह दिया था, मोटर स्टार्ट नहीं हुई and you send someone on the side, अब वो देख रहे हैं and suddenly they saw okay they will be देखें या तो वो स्क्रू टर्मिनल्स वायरिंग उनको ठीक करेंगे या फिर आपके रीसेट वगैरह जो बटन होंगे उनको प्रेस करेंगे. इन आइदर सिचुएशन मोटर स्टार्ट्स abruptly, so this may be very dangerous. अब इससे भी ज्यादा और सेफर ऑपरेशन की तरफ हम जाते हैं and the corresponding logic, so there should be some way to sense the contactor's status. एनी आइडिया कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे मजीद?
कॉन्टेक्टर की जो so इसका मतलब है कि हमें कॉन्टेक्टर से भी कोई एक आध इनपुट चाहिए होगी so that the connection is made. So what we can do here is we will connect the auxiliary switch to of the contactor to the PLC's input. Or if you see here now, this contactor is now connected to here in 5. Yeah. So the contactor, ये जो हमारे पास contactor है, ठीक है, this is connected now. This is the contactor. This is the overload switch. Input number 5. Input number 5 पे we have connected back. So now PLC is able to sense the real-time status of the contactor via the input channel number 5, right? और PLC प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन क्या होंगी? PLC प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन ये होंगी कि अब seal in के लिए we will be using this auxiliary coil. So this is a new this is the new tag. This is a new tag जो कि इस contactor को के status को show कर रहा है. So a new tag name to the new auxiliary input in contactor aux is used as the seal in contact instead of the out contact bit. So अब इस तरह से होगा कि the PLC will say 1 to the motor. ठीक है, this will energize the contactor, and once the contactor is okay, this one will get back here on input number 5. और इसी चीज को अब हम यहाँ पे use करेंगे for the seal in. Before we were using the seal in from within the memory. So before पहले हमारे पास क्या था? Before the seal in was within PLC, and it was a memory bit. But this time, अब जो हम कर रहे हैं now after this circuit, what we are doing, the seal in is a feedback from contactor. So this is a more realistic and from the field. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फील्ड में कोई भी गलती अगर होगी तो the real contactor will be de-energized. So this is one this is another modification to the PLC program. So now if the start is pressed and motor contactor fails to get energized, किसी भी वजह से अगर motor contactor fail होता है, so the PLC's output will fail to latch. So अब हमने दो चीजें कर ली. एक तो ये स्टॉप बटन का जो था इशू, उस लॉजिक में देखें, लॉजिक बनाने के बाद हमने स्टॉप बटन की जो पॉसिबल रियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उन सबको भी कैटर किया अपनी लॉजिक में. उसके बाद फिर इस रियल जो कॉन्ट्रैक्टर है इस पे भी जो पॉसिबल रियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको भी हमने अब कैटर किया. सो इट वाज लाइक इन आवर टास्क हमने पहले एक चीज की उसकी बेसिक लॉजिक डेवलप की, फिर लॉजिक के बाद एक डिवाइस के हिसाब से उसको सेव किया, डिवाइस नंबर 1 के हिसाब से, डिवाइस नंबर 1 के हिसाब से उसको सेव किया, फिर हमने डिवाइस नंबर 2 के हिसाब से उसको सेव किया. ठीक है, so this is how you start, but from the very beginning आप ये काम नहीं कर सकते, पहले you solve it and then you have to modify. तो ये आम तौर पे मैंने it always happens कि अच्छे PLC programs जो हैं वो they actually grow from the basic logic और उसके बाद उसमें safety concerns आप add कर दे जाते हैं. ठीक है, is it clear? So in summary, what we have done is when the open fault in the contactor's coil is cleared, this time agar koi bhi wajah hui thi, so motor will not immediately start up because के उसकी जो serial contact है आपने press किया, for example we press this one, motor start नहीं हुई, so there will not be any, so serial contact जो है आपके पास zero नहीं होगा जब तक ये contactor आपके पास okay ना हो. ठीक है, so this is more safer operation. So this is how the automation engineers can ensure safe and zero accident in the
plant operations. Again, I should write few points here. Number one, जो PLC program है, we complete the logic. We complete the logic, जो भी essential logic जिसको आप कहते हैं, essential logic, जिससे आपके पास प्लांट चलना शुरू हो जाएगा. Second, we incorporate or modify uh, the PLC program for safe operation. And this is how we do. It's like device by device. ठीक है? Okay. So yeah, यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है? You take the attendance now. Okay, मैंने snap ले लिया, फिर मैं अभी इसकी attendance भी इंशाल्लाह mark कर दूँगा. So let's move on. The counters, PLCs में जो counters हैं, they are also just like another instruction, and the counting is a function. And for example here, अब आपके पास जो है counter is this is like a function, or these are the inputs of the counter, and these are the outputs. In terms of types, हमारे पास count up, we can count down, and we have a counter that can do both count up and count down. This will be doing CTU will be counting up, and this will be counting down. Okay, and this is the UD is the counter up and down. So counter up में हमारे पास एक input है, whenever it is energized, तो आपके पास यहाँ पे इसकी जो value it will start increasing. PV is the preset value counter की, and after completing the preset value, जैसे ये count start होगा तो 1, 2, 3 and so on, so it will starts counting. और जब काउंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो आउटपुट है दिस विल बी एनर्जाइज्ड. इनिशियली इट विल बी 0 अप टिल द आपके पास जो काउंट पूरा हो जाएगा तो दिस विल बिकम 1 and 1. काउंट डाउन के अंदर we set a preset value let's say 5, and then we say load. This is LD is the load. लोड की भी आप लॉजिक कर सकते हैं कि देयर माइट बी अ लॉजिक जिसके बाद जो है ये वैल्यू आपके पास प्रीसेट वैल्यू में यहाँ आ जाएगी 5, एंड देन फॉर एवरी ट्रांजिशन हियर आपके पास ये 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, एंड अप टू 0. तो जैसे ये 0 को पहुंचेगी तो ये आपके पास जो आउटपुट बिट है दिस विल become 1. So this will be 0 0 0 0 and finally it will become 1. सिमिलरली जब आप बस यहाँ पे काउंट बढ़ता जाएगा तो आखिर में जाके जैसे ये चलते चलते 25 होगा ये काउंट अप के अंदर, तो दिस विल बी 0. क्यू आउटपुट की बात कर रहा हूँ मैं, तो दिस विल बी 0 0 0 0 एंड फाइनली जैसे ये इसको बराबर पहुंचेगा या उससे ज़्यादा होगा तो 1 हो जाएगा. काउंट अप एंड काउंट डाउन के अंदर वी हैव टू वी कैन सी दैट ये एक तरह से इन दोनों को मर्ज कर दिया. So it also has a preset value, it has the current value, and the load command. And R, what is the R? R is the reset. और reset आपको हर चीज में, इसमें भी reset आपको मिलेगा काउंटर में, और इसमें यहाँ पे लोड है हमारे पास जो reset का काम कर रहा है. So count up and count down. जैसे count up करेंगे तो ये it will starts counting up, and count down will decrease the counters. In this example, we have some kind of boxes, or there are light sensors here, light source continuously it is coming here to the light sensor, or this light sense is connected to in 4. So input 4 पे हमारे पास ये connected है, and this is the counting example of this कि जो sense object है, I think it is in count number, yeah, this is in
connected to the in number 4, जो कि basically इसका address है I,1/4, और we have a reset count push button in normally open position, और जैसे आप इसको press करेंगे so it will energize and give an input, and this is connected to in 5, ठीक है. So this is connected to in 5, और इसका एड्रेस है इसका एड्रेस है हमारे पास sorry, the address is I1/5. So anyway, after 25, जैसे कि आपके पास यहाँ पर this will be the connections, it will be energized completely, तो आपके पास ये connection बना हुआ है, right? जैसे this box will come in front of this, तो ये लाइट ब्रेक हो जाएगी. लाइट ब्रेक होने की वजह से इसकी एनर्जाइजेशन जो है वो भी ब्रेक हो जाएगी. So this will give a pulse to us, right? And then so counts, CU is the count up input, R is the reset, CV is the current value, PV is the preset value, and according to IEC 61131-3 standard, okay, the moment, let me erase it. So when we have okay, so IC के मुताबिक the counter output, this Q will become 1 कि जब CV either is greater than or equals to the preset value, ठीक है. This is so when the CV previous, अब ये वाली condition है हमारे पास. अभी देखें तो CV की value CV is greater than or equals to PV, तो no. So इस केस में आपके पास Q की वैल्यू जो है वो 0 होगी. बट यहाँ पर अब आप देखें तो यहाँ पर CV is greater than equals to PV. Yes. So that's why the Q value is 1 now. ठीक है. Q value is 1. Here Q value is 0. Here Q value is 1. ठीक है. This is how count up will work. In countdown, countdown will turn on the output coil when the CV reaches 0. Or load input is, this can be, for example, a mechanical switch है जिससे आप हर दफा इसको load करवा सकते हैं. This value come here. Countdown में, so initially it will be loaded with 25, and then for every input here, see, it will become 74, 23, 22, and so on up till 0. जैसे ये 0 होगा, so if this is your Q, this is your CV value. So this will be 0, 0, 0 until here it will become 1. Okay. So the load in, and then we can use load input. Potential problem with the single sensor and counters. Current objects counting system cannot discriminate between the forward and reverse motions. अगर हम यहाँ बैठ पे वापस आए तो whenever this line is hindered by any box, जब भी ये लाइन ब्रेक होगी किसी भी बॉक्स से, चाहे बेल्ट को आप आगे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं, in any dimension, तो this will count. इसका काम है काउंट करने का. जैसे यहाँ पे लाइन ब्रेक होगी तो ये फौरन काउंट करेगा एक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को. So because of this, the problem is single sensor बेल्ट पे अगर यूज करेंगे या काउंटर, so that will be the problem कि current object counting system cannot discriminate between the forward and the reverse motion of the belt, and any reverse movement may increase the counting, और आपके पास counting false counting शुरू हो जाएगी. So in that case हम क्या use कर सकते हैं? We can use two sensors, sensor A and sensor B, and then अगर ये forward travel कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा? Forward travel, for example, this is the forward travel. Okay, from this is the forward. The forward travel में आपके पास सबसे पहले the box will come here and it will break A. इसको पहले रोकेगा. जैसे इसको रोकेगा तो आपके पास जो है for this time we can see कि आपके पास जो है वो
नेगेटिव ट्रांजिशन है, एंड देन उसके बाद फिर ये बॉक्स यहाँ तक पहुंचेगा बी को, उसके बाद फिर बी. सो दिस इज द फॉरवर्ड टाइमिंग. और अगर रिवर्स होगी तो रिवर्स के केस में सबसे पहले आपके पास जो है बी ब्लॉक होगा और फिर उसके बाद ई ब्लॉक होगा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन यूज. और हमारे पास दो कमांड्स हैं एन की, ठीक है, और पी की. इट इज द ट्रांजिशन कमांड्स. These are the transition commands. और इनका काम क्या है? इनका काम ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास if this is the circuit, okay, so and I have a contact this one, and जो contact आपके पास negative वाला है, तो negative वाला जो contact है इसमें we will have a pulse here. जब आपके पास positive से negative edge detection है, so it is like a negative edge detection. और जो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट होगा पॉजिटिव एज डिटेक्शन का, द मोमेंट आपके पास यहाँ पर फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इट मूव्स, तो शुरू में हमारे पास एक पल्स आ जाएगी ऑन की. सो दिस इज अ पॉजिटिव. बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह में भी शायद ये पढ़े होंगे, पॉजिटिव एज या पॉजिटिव ट्रांजिशन. इस पॉजिटिव ट्रांजिशन की बेसिस के ऊपर हम प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हैं. एंड वी कैन यूज फॉर एग्जांपल सेंसर ए इज ओके ऑन है, और साथ में हमें बी की जो नेगेटिव ट्रांजिशन है दिस विल टेल अस के नेगेटिव ट्रांजिशन आपके पास किस में आ रही है. ठीक है, सो दिस इज ए नेगेटिव ट्रांजिशन इन ए एंड दिस इज द नेगेटिव ट्रांजिशन इन बी. ओके, सो by using this logic we can count up और काउंट डाउन किया, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपके पास रिवर्स में कौन सी मूवमेंट है और फॉरवर्ड में कौन सी है. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. क्विकली वी कैन गो थ्रू द टाइमर्स. हम यूज करते हैं दो तरह के टाइमर्स हैं आपके पास, ऑन डिले टाइमर्स एंड ऑफ डिले टाइमर्स. इन ऑन डिले टाइमर्स इट वर्क्स लाइक इट वर्क्स लाइक कि आपके पास जो है जब आप इसको जब स्टार्ट करेंगे सो इट विल स्टार्ट काउंटिंग. एंड फाइनली फॉर एग्जांपल देयर इज अ पुश बटन. आपने बटन प्रेस किया है, कोई मोटर स्टार्ट होनी है, तो फॉर 10 सेकंड्स फॉर एग्जांपल और मिली सेकंड्स और व्हाटएवर डिपेंड्स ऑन द यूनिट. सो 10 सेकंड्स के लिए एक सायरन ऑन होगा. इट विल मेंशन कि अच्छा मोटर स्टार्ट होने लगी है. एंड आफ्टर दैट, ओनली आफ्टर दैट, जो टाइम काउंटर टाइम करेगा, जो जैसे 10 सेकंड हो जाएंगे 10 सेकंड्स के बाद दिस विल बी एक्टिव और टाइम इज elapsed. और फिर इसको हम यूज कर सकते हैं टू स्टार्ट द मोटर. ठीक है, टू स्टार्ट मोटर आफ्टर let's say few seconds. ठीक है, so this is called on delay time. And we also have off delay time. Off delay time is like this one. Okay, it will off after, for example, it will take it will keep the output active and turn off after this amount of time. Okay, so this is our on delay timers जो शुरू में आपके पास होते हैं, and this is our on delay timer. So when we ये input timer पे जब हम input देते हैं तो उस शुरू में वो output को active करने में थोड़ा सा time लगाती है, let's say 10 seconds delay. इसको आप कह सकते हैं ये delay timer है. और जब आप किसी चीज को off करते हैं, off करने के लिए आपने उसको active किया, तो उसके off होने के बाद there will be the off delay time in the end. All right. Now these are the instructions for the data comparison instructions. PLC को
बाइनरी रियल वैल्यूज से भी काम करना है. वी जस्ट सॉ कि डिजिटल नहीं, इसमें टाइमर्स भी हैं, काउंटर्स भी हैं, फिर एनालॉग इनपुट्स भी हैं. So for that purpose, IEC 61131-3 standard specifies a variety of data comparison instructions for comparing non-boolean. अच्छा, एक कंपैरिजन की है, इनकी आउटपुट डिजिटल ही है, 0 या 1 होगी, लेकिन सबकी 0 या 1 होगी, लेकिन इट डिपेंड्स कि ये दो इनपुट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. And there is an example here. I will directly switch. Yeah, for example, this is the motor of the two redundant electric motors हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि let's say we have motor number 1, we have motor number 2, और आप ये दोनों redundant हैं, यानी they both are doing the same job, लेकिन आप पहले इसको we want to give rest to one, give rest to one and use the other. ये हमें अल्टरनेट करना होगा. तो ये दिस पीएलसी प्रोग्राम विद द टाइमर हम ये फिगर आउट करेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम हमें कौन सी वाली मोटर चलानी चाहिए. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग ग्रेटर देन. दोनों का टाइम आप नोट करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, एंड देन वी यूज एन अप्रोप्रिएट मोटर फॉर दैट. सबट्रैक्शन की कमांड्स भी हैं. सो फ्रॉम हियर इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल, और फिर यहाँ से हम आगे पे इसको एंड करेंगे. बस आप कुछ 2-3 स्लाइड्स लगेंगे. Any questions till now? Let me take the attendance again. Okay. Thank you very much. इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा.